Students, see question. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylinder part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Student, एक टेंट है जिसका बॉटम सिलेंड्रिकल पार्ट है और अपर पार्ट कोनिकल है. सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 2.1 है, डायमीटर 4 मीटर है. कोनिकल पार्ट का डायमीटर भी 4 मीटर है और उसकी स्लांट हाइट स्टूडेंट 2.8 मीटर है. तो हमें बताना है कि उसे बनाने के लिए जो कैनवस लगेगा उसका एरिया कितना होगा. दैट इज कट सरफेस एरिया ऑफ बोथ द फिगर. अगेन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर. और हमें कॉस्ट ऑफ कैनवस भी निकालनी है अगर हमें 500 रुपीज देने हो पर मीटर स्क्वायर. दैट इज इजी. सरफेस एरियाज को मल्टीप्लाई करा देंगे 500 से. नाउ सी द फिगर. दिस इज अ सिलेंडर ऑफ हाइट 2.1 मीटर and diameter of 4 meter. Also a conical top of diameter 4 meter and the slant height of 2.8 meter. Now height of cylinder h is equal to 2.1 meter and radius of cylinder r is equal to 4 by 2, that is half of diameter is equal to 2 meter. So the cut surface area of cylinder is equal to 2 pi rh, that is 2 into 22 by 7 into 2 into h will be 2.1. 7 से 2.1 को जब हम डिवाइड करेंगे that will give 0.3. Now 2 into 22 44, 44 into 2 88, 88 into 0.3 will give you 26.4 centimeter square. Now radius of cone r is equal to 4 by 2 is equal to 2 meter and slant height l is equal to 2.8 meter. Now the cut surface area of cone is equal to pi rl, that is 22 upon 7 into 2 into l is 2.8. 7 से स्टूडेंट 2.8 को जब आप डिवाइड करेंगे that will give you 0.4. Now 2 into 22 is 44 into 0.4 will give you 17.6 meter square. Now the total area required to make the canvas is cut surface area of cylinder plus cut surface area of cone, that is 26.4 plus 17.6 is equal to 44 meter square. Now the cost to make the tent is equal to 500 into 44. That will give you 22,000 rupees. Question is completed.